Yes. Okay. So now you enter in 7th standard. Okay. Yes, sir. Yes. So let's start from our first chapter. So what is the first chapter of 7th standard? That is integer. क्या चैप्टर का नाम है? Integer. इंटीजर. ठीक है. Integer. So let's start from the history of the numbers. So first of all, we should know about the natural numbers. So are you know about it? Natural number. Yes, sir. Numbers that start from 0 to 10. 0 to 10 नहीं रे. Natural numbers are start from 1 to 1 to 9. positive infinity. Oh. हाँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जहां तक नंबर चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कंटिन्यू अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. So these numbers are also called as countable numbers. Countable Yes, numbers. numbers. Okay. So we are starting counting from 1 only. So that's why the natural numbers are start from 1 to positive infinity. Okay. Huh. Yeah. So the next number, that is whole number. Okay. So in whole number, if we are adding 0 in natural number, then we will get a whole number. अगर हमने natural number में 0 को add कर दिया like this, okay, हाँ. तो हमें होल नंबर मिलेंगे. तो होल नंबर में ऐसी क्या चीज है जो नेचुरल नंबर में नहीं है? 0. 0. वेरी गुड. सो नेक्स्ट नंबर, दैट इज इंटीजर. सो इन इंटीजर there is a negative. When if we add negative number in whole numbers, then we will get an integer. So for example, like -3 -2 -1 and so on up to negative infinity, and then Yes, sir. we are adding 0 also, and then 0. positive numbers also. Okay, up to positive Yes, sir. infinity. So these all Ready. numbers includes in integers. Got it? Yes, sir. तो कौन कौन से नंबर आते हैं इंटीजर्स में? Integers में minus माइनस भी आएंगे, -10 प्लस भी आएंगे, 0 भी आएगा. आएंगे. ओके. होल नंबर में कौन से आएंगे? होल नंबर में 0. 0 to positive infinity only. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 like that. Okay. Now natural number में कौन से नंबर आते हैं? From 1 to 0 to natural positive infinity. So this is the difference between these three concepts. If I say some sentence here, I will give you some sentence. So if you should tell me is sentence is true or false. So the sentence is that every whole number is integer. Is it correct? No. No. क्यों नहीं करेक्ट है? पहले तो उसका मतलब बता मुझे. ये सेंटेंस का मतलब क्या है? What is the meaning of this sentence? It's saying that every whole number from 0 to positive infinity has integers. Has integers. No. No. क्यों नहीं? ये ट्रू स्टेटमेंट है. कैसे ट्रू है मुझे बताओ. ट्रू इसलिए, whole numbers are 0 to positive. हाँ, तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि एवरी होल नंबर, सो ऑल होल नंबर्स इंक्लूड इन इंटीजर्स. So there is, this sentence is correct because see, whole numbers are start from 0 to positive infinity, and this part also includes in integers also. इंटीजर में भी तो है ना वो पार्ट पूरा का पूरा. तो हम बोल सकते हैं कि हर एक होल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं. कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं. लेकिन अगर यही सेंटेंस थोड़ा रिवर्स हो जाए, इफ आई से एवरी integer is a whole number, then problem happens. What is the problem? हर कोई इंटीजर होल नंबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटीजर में ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो होल नंबर में कभी नहीं आएंगे. ऐसे कौन से नंबर्स हैं? नेगेटिव नंबर्स है ना. नेगेटिव. So in integer there are some negative numbers which
which never comes in whole numbers. मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर कभी होल नंबर में आ ही नहीं सकता, ठीक है? हाँ तो हाँ तो एवरी सेंटेंस गलत है, मतलब हर कोई इंटीजर, हर एक इंटीजर नहीं होगा होल नंबर, कुछ इंटीजर होल नंबर होंगे लेकिन हर एक नहीं होगा, ठीक है? हाँ। क्या समझा बताओ? और इधर समझा कि पहले एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब जो होल नंबर है उसके उसके अंदर इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर लाइन में वो इंक्लूडेड है। बराबर है। फिर दूसरा स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर has its own whole number, फॉल्स, क्योंकि इंटीजर में -3 -2 -1 वैसे होल नंबर में नहीं। हाँ, ठीक है, लाइक दिस हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। इफ आई से एवरी नेचुरल नंबर is whole number, is it correct? Every natural number is whole number. Yeah. Yes, definitely correct. Okay, if I say Yes. Because positive natural numbers are included. every natural number Is included in whole number. is integer, is it correct? No. Hmm? Every natural number. Is integer. Yeah. Yeah, it definitely correct, because in integer 1, 2, 3, 4. so there are natural numbers one from 1 to positive infinity, so integer includes the natural number, so that's why we can say that every natural number it's also called as an integer. Okay, Yes. yeah, so take a screenshot of the screen. Um, Okay. 440. Are you did it? 1 second, sir. Doing it. Done, sir. Okay, so briefly explain this screen. शुरुआत से Okay, लास्ट तक मुझे थोड़ा सा explain करके दिखाओ. natural numbers are numbers from 1 to positive infinity, which Yeah. are that, and they're countable. Whole numbers are from 0 to positive infinity. Integers are from 0 to negative infinity and positive infinity. Very good. And throughout these statements where every whole number is an integer, it's true because the whole number has an integer in it, right? Because the integers have a whole number in it. Then every integer is a whole number. It is false because integers aren't in whole numbers. Then every natural number is a whole number. True. Because there are natural numbers and whole numbers, and every natural number is an integer. True, because in integers there are natural numbers. Okay. That. Okay, next. So we have to study in this chapter about integers. Okay. Now we are able to understand which numbers are integers. So in integers, there is a negative numbers 0 and positive numbers also. Okay. So is decimal number included in integers? Is decimal number? No. No, decimal numbers and fractions are not included. Okay. Okay. Addition and subtraction is included. I know the addition and subtraction. Okay, now we go forward. So the first thing in your chapter is that performing the operations in mathematics. So there are 4 operations in mathematics. The first one is addition, then subtraction, then multiplication, then division. Okay. Yes, sir. So now Yes, sir. we are going to
study one by one. So the first operation, that is addition. Addition of integers. How to add Yes, the sir. integers. And the rules for addition and subtractions are same. So also subtraction of integers. Integers. So we are Uh, dealing these both topic simultaneously. So now let's take few examples here. So here are few examples like 2 plus 3. How much? 2 plus 3 is 5. Positive 5 or negative 5? Positive. Positive 5. Okay. Okay. So if I am giving you example 2 minus 3, then what happened? That will be 1. That will be 1. Positive 1. Positive 1. Positive 1. Okay. If I am giving you minus 2 and then minus 3, then what happened? 2. 1 second. Minus 5. Minus 5. Okay. So if I am giving you minus 2 and then plus 3, then what happened? Positive 1. Positive 1. Okay. So tell me how you solve it. आपने इसको कैसे सॉल्व किया? So for 2. Which one? हाँ, ये मैंने जो मार्क किया. So 3. Oh, wait. हाउ यू सॉल्व इट, मतलब कौन से रूल लगाए, क्या किया आपने? So it's asking to subtract 3 from minus 2. So we have to subtract 3. So in normal subtraction without integers, you will go behind. And taking the case of minus, you will go ahead but with the minus. So just take it as 3 plus 2, 5, add a minus. Okay. Okay, 1 second. So in this case, your this answer is correct. This one is also correct. This one is also correct. This is wrong. Okay. Now why this is wrong? Minus 3 is रुको, मैं बताता हूँ. पहले रूल्स को समझ लो. हमें रूल्स को समझना है, ठीक है? अब ये रॉन्ग क्यों हो रहा है, तो हमें रूल्स नहीं पता है. अभी रूल्स मैं समझाता हूँ आपको. तो क्या होता है, सबसे पहली चीज, it रूल is नंबर. negative 1. हाँ, इट इज नेगेटिव. व्हाई नेगेटिव? So because of the symbol. व्हाट? So because of the symbol. So if we say 2 minus 3, the greater number is 3. So subtraction symbol will come. If there are no signs given to the either Very number. good. So the answer has a sign of greater number. होता है, आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन होता है. तो सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे. तो पहला रूल क्या था आपका? इफ सेम साइंस ऑफ नंबर, सेम साइंस अगर होंगे तो हम उन नंबर्स की क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. ठीक है? सेम साइन का मतलब होता है अगर वो, जैसे ये प्लस और प्लस है लाइक दैट, और ये माइनस माइनस है, तो ये सेम साइंस के हैं. ठीक है? सेम साइंस है ना दोनों के, माइनस माइनस या प्लस प्लस. प्लस या प्लस रहेंगे. So there is a full table for it. Minus minus equals plus plus. हाँ, वो टेबल No, से अच्छा sorry. ये Minus minus equals plus and plus plus equals plus. And plus minus equals depends on what's the larger number. वेरी गुड. तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखो, ये जल्दी याद रहता है कि सेम साइंस अगर देखेंगे, सेम का मतलब होता है दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, प्लस प्लस या माइनस माइनस. तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. ओके, एडिशन ऑफ टू नंबर्स. आफ्टर दैट रूल नंबर सेकंड केसेस में से, इफ डिफरेंट साइंस आर देयर, डिफरेंट अगर साइंस रहेंगे तो क्या होगा, लाइक माइनस या प्लस, और या प्लस या माइनस, लाइक दिस. Then it depends on which one is the greater number. वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द नंबर. फर्स्टली सब्सट्रैक्ट द नंबर. जैसे आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस आपने 3 में से 2 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया. हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स. और रूल नंबर 2 है,
कि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद we have to give sign to the answer. Okay, Yes, sir. अब आंसर का जो भी साइन रहेगा, सो साइन ऑफ आंसर is Sign of answer is greatest number sign. greatest number. नहीं तो इसको ऐसे लिखो, greatest number sign given to the answer. Greatest number sign given to answer. Okay. हाँ, तो दैट्स वाई आपका यहाँ पे क्या हुआ था, ये -3 विच इज ग्रेटेस्ट वन, सो दैट्स वाई दिस आंसर शुड बी माइनस. ओके, and in this third case, why this answer -5 comes? Because of this minus and minus, we will add. Okay, if same signs happens, we will add the numbers. So 2 plus 3, it becomes 5. Okay, and after that you are giving the sign of greatest number. Which number is greatest? 3. So 3 has a negative sign, so that's why we are giving negative sign here. Any doubts? No, sir. Okay, so tell me briefly. Okay, so including the question, sir. मुझे एक्सप्लेन करके दिखाओ आपने आंसर कैसे निकाले. किसका? ये जो भी आपने आंसर निकाले ना, यहाँ पे 2 + 3 = +5 आया. 3 + 5 2 क्यों plus आया? 3 is equal to 5. That's normal addition. Then plus 2 minus 3. So now plus 2 plus 2 minus 3 is 1. But the negative minus is the negative number on 3. 2 is plus positive and 3 is negative because of the minus. They both are 1. So the larger number in this case will be subtraction, because 3 is the larger number and it has a subtraction symbol. -2 minus 3. They both are 2 and 3. So we just subtract them. Because 2 minus 3, we are subtracting, so we'll get -5. Then 2 plus -2 plus 3 equals +1, because 2 plus 3 is 3 plus 2 is 5, but minus, which is 2 below, we'll get 1. 3 has the greatest sign, so 3 has a Yes. positive sign, so that's why answer is positive. And why we are subtracting these two terms? How this Because we answer have becomes 1? Why we are writing 1 here? Sir, because -2 is 2 below 0, and when you add 3 to it, it becomes 1. So basically these two numbers has a different signs, plus and minus. Okay. Yes, sir. When different signs happens, then we are subtracting the numbers. Got it? Yes. So now subtraction between these two numbers is 1. So 3 minus 2, that is 1. Okay. Yes, sir. And after that, Yes, sir. after that we will give the greatest number sign to the answer. So which one is greatest? 3. Yes, sir. So what is the sign of these 3? That is plus. So we are giving positive sign to the answer. Got it? Yes, sir. Tell Yes, me. sir. Tell me. So positive sign will be 2 plus 2 minus 3 will be 1. So, and the larger number 2, which is 3, with the symbol of positive, we will add +1. Okay. Take a screenshot. That's it. Okay.
So I will give you some questions on this topic. Tell me the answers. So there are few questions here. 2 minus 3. No, 2 minus 3. 12 minus 3. How much? 12 minus 3 is 9. Positive 9 or minus 9? Positive. Positive 9. Okay. If I will give you same question, minus 10 and plus 3, then what happened? It equals minus 8. Minus 8. How minus 8? So because minus 10, we're adding 3 to it. 3 minus 10. Wait, no, minus 7. Sorry. Minus Okay. 7. So it should be minus 7. Okay. Minus 7. Yeah. So now I will give you some another question, that is minus 15 minus of 10. Then what happened? Minus 15, minus 10, minus 25. Minus 25. Very good. Next, if I am giving you one example, minus 20 and plus 21, then what happened? Minus 20 plus 21. 1. Positive 1. Positive 1. Okay. Then 30 minus 6. Then what happened? That become 24. Positive or negative? Neg mm, Positive. Why positive? So because the symbol negative is towards 6. 6 is the negative number. It is not the bigger number. Largest number is 30. 30. Largest number has a positive sign. So we So will give negative will be 6. we will give the largest number sign to the answer. Okay. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. We will take another question here. If I say minus 3 plus minus 1, then what happened? Minus 3 plus minus 1. Then how to solve it? Wait. Minus 3 plus minus 1. Minus 4. Minus 4. How to solve it? So, it's addition of minus. Addition 1 of plus 3. 1 plus 3 will equal to 4. So, and the bigger number is 3. So, and it has the subtraction symbol. So, minus 3. Then if I say minus 4 minus of minus 2, then Minus 6. minus 6. How? Wait, no, subtract. Then there will be minus 2. ओके ठीक है, यहाँ पे गलत हो चुका है थोड़ा सा. ठीक है, इसको पहले समझो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ओके, फोकस्ड ऑन स्क्रीन. व्हेनेवर टू साइंस कम्स नियर, मतलब जब दो साइंस ऐसे नियर आएंगे, मतलब पास पास आएंगे, ऐसे लाइक दिस, माइनस माइनस पास पास आ गया, प्लस प्लस पास आ गया, बिटवीन टू साइंस देयर इज अ नो नंबर. ओके. हाँ, मतलब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ आपको? कोई भी दो साइन के बीच में कोई नंबर नहीं है, ऐसे पास पास आते हो. ठीक है. हेलो. यस सर. हाँ, इस केस में हमें क्या करना है? हमें वो रूल लगा के लिखना है, लाइक ये माइनस थ्री रहेगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस प्लस एंड माइनस वी आर पुटिंग माइनस एंड दिस इज 1. ओके. ये प्लस माइनस क्या हो जाता है? डिफरेंट अगर साइन रहे, डिफरेंट साइंस रहे तो सब्ट्रैक्शन लिखना है, और अगर सेम साइंस रहे तो एडिशन लिखना है. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस माइनस 4 एज इट इज, then instead of this minus and minus we are putting plus. Instead of this minus and minus we are putting plus and then 2, and then simplify it. Minus 4 plus 2, how much?
minus 4 plus 2. Minus 4 plus 2 will be minus 2. minus 2. Minus 3, minus 1. How much? Minus 3 minus 1 will be minus 4. Minus 4. Very good. So tell me the next answer. So like minus 6 plus minus of 2. Then tell me. Minus 6 plus minus 2 First will of be all, minus. we are writing minus 6 as it is. Okay. Yes. Instead of these two signs, we are putting which sign here? Yeah, addition. Instead of this plus and Addition. minus. Addition. एडिशन कैसे करेंगे मुझे बताओ. डिफरेंट साइंस है Minus दोनों. minus. दोनों डिफरेंट साइंस है. मैंने क्या बोला? डिफरेंट साइंस होंगे तो सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, और सेम साइंस अच्छा होंगे तो इधर. एडिशन लिखेंगे. हाँ, क्या समझा? तो subtraction. हाँ. हाँ. इफ देयर इज अ डिफरेंट साइन, डिफरेंस का मतलब होता है प्लस एंड माइनस, लाइक डिफरेंट डिफरेंट साइंस, then Yes, sir. we are putting minus. And if there is a some So it same will be signs, minus 8. It will be minus 8. so here minus 2 comes, and then minus 6 minus 2, that is minus 8. Okay. Yes, sir. Next question. So tell me, minus 6 plus minus 2 minus 3, then how to solve it? Minus 6 plus minus 2 is 8. Minus 3 is 11. हाँ, रुको, कैसे सॉल्व करना है? रुको, पहले इसको प्लस या माइनस जो सामने आए हैं उसको खत्म करो. ठीक है. Yes, sir. तो we can write in next step minus 6 as it is, and instead of this plus and minus, what should we write here? We should write subtraction. Subtraction. So minus 2 here and then minus 3. Okay. So now we are able to solve first two numbers. So solve first two numbers, and after solving first two numbers, we are solving the third number. 6 has a negative number and 2 also. They both are the same, so we'll do addition. Because anything that's the same, we'll add. That'll become 8. Then another minus 3 because we're subtracting it. That will become 11. Minus 11. Larger number sign. Okay. Yes, sir. Hmm. Yes, sir. So this is the method. So now take a screenshot. Um, um, the Okay. So let's take few examples also. So here, minus 2 plus minus 3 minus of, in bracket, 2 plus of minus 2, and then bracket close. Then how to solve it? Tell me which numbers we should solve first. minus 2 plus minus. First, we'll do minus 2 plus minus 3. So we'll subtract these two. Minus 2 नहीं 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 नहीं, plus रुको 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 रुको. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. इसको ब्रैकेट. bracket. फिर अगर ब्रैकेट होंगे तो ब्रैकेट, मतलब जैसे इसमें ब्रैकेट है तो ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. ठीक है. Okay. फिर उसके हाँ. बाद में जो होता है उसका प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस है. ये ब्रैकेट होंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. आफ्टर दैट इफ देयर इज अ डिवीजन, then division has a second preference. Okay. So, yes, sir. If there is a multiplication, multiplication has a third preference. हाँ. And then fourth preference is addition. Bodo mass से. हाँ, बॉड मास का रूल आपको यूज करना है. ठीक है. एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन.
सो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करने की ऐसी जरूरत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कैसे भी कर सकते हो, बस ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, तो राइट इट एज इट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल change the sign, confirm the sign. So in this case there is a plus and minus are connected with each other, okay. Yes, sir. And here also, Yes, here also plus and minus connect with each other. So first of yes, all sir. solve them. That'll become subtraction, sir. So here minus 2, and instead of this plus and minus we are putting minus 3 here. Minus 3. Then in And bracket then we're going to put 2, 2 instead of minus plus minus we are putting minus, 2 minus 2. okay. So what is the value of 2 minus 2? Value of 2 minus 2 is 0. So this becomes 0. So if we And are then the subtracting value of 0 from any 2 numbers, the will number itself stay is the an answer. same. So first of all solve these two numbers. So what is the solution of these two These two numbers? numbers minus 2 plus and minus subtracted by minus 3. They both are the same symbols, minus and minus. So we'll do addition. Okay. Because minus and then that'll become 5. And then the greater number is 3, which has the subtraction symbol, so it'll become minus 5. So it becomes minus 5 and then minus 0. So if we 0. are subtracting 0 We from any add number, those, and when you add something to 0, it doesn't change. doesn't change. So minus So 5 is an answer. answer. Okay. Yes, sir. Yeah. So next case. So solve the next question and tell Sir, me. after the meetings and sir, after the meeting ends, I won't be able to rejoin because I have to go out. नहीं ठीक है, आज के लिए आपका ये लेक्चर सफिशिएंट है, मैं हाँ, आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। हाँ. आफ्टर Hmm. after disconnecting meeting you can leave. Yes, sir. So next question, if I say minus 2 minus of Yes, sir. 10 and here bracket, is this comes in one bracket, then we should add in another bracket minus of 3 plus minus of 2 in another bracket. So tell me what is the first step. So the first one we'll do 2 First plus of all, 10. first of all, we are solving this bracket. Okay. We'll do 2 plus 10, sir, because minus and minus are both the same symbol. So, and whenever there are two same symbols, they'll be counted as addition. So 2 plus 10 equals 12. What about Now sign? 12 plus bracket What about sign? minus, Plus or minus? so the sign will be positive. How positive? Greatest number is The negative. larger number is 10. Oh, negative. So, Largest number is negative. So that's why this answer is minus 12. Okay. minus 12 plus minus 3 Now plus in next minus 2. bracket. So here see The two next bracket signs. will be subtraction. नहीं नहीं नहीं, पहले टू साइंस बाजू बाजू में आ गए तो उनको पहले सॉल्व करो। हाँ. तो पहले कैसे करो? That'll be subtraction. तो minus 3 here. So and 3 instead of this minus minus 3 minus 2. Okay. So now minus 12 as it is, then plus solve this bracket. So what is the answer? That bracket will be minus 3 plus minus 2. Minus That'll be minus 5. minus 5. Very good. So now two signs are connected each other here. So subtraction, that will be minus 17. So the answer will be minus 12 minus 5. So the answer will be minus 17. Very good. Okay. कोई Yes, इशू? sir. चलो वेरी गुड, आपको आ रहा है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो मैं आपको कुछ वर्कशीट दे देता हूँ आज, फिर इसके बाद में हम कल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। Yes. ओके, आज इतना सफिशिएंट है। हाँ. हम नेक्स्ट लेक्चर में कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ. आज के लिए मैं एक वर्कशीट भेजता हूँ, अभी वर्कशीट कंप्लीट करो विद इन आवर। Sir, I have to go out right now. अच्छा, बाहर I जाना है? cannot. हाँ. तो कब कंप्लीट करोगे वर्कशीट?
Oh, sir, whenever I get back. Okay, no issue. You may have it from later tomorrow because we'll probably be coming back at night. Okay, ठीक है. Because I have to go for a wedding. Okay. So today we stop here and we will discuss continue tomorrow. Yes, sir. Take a screenshot of this screen first of all. Yes, sir. Yes. Done, sir. ओके सबसे पहले एक चीज ये जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिए है वो मुझे नोटबुक में चाहिए. ठीक है. Write it down in your notebook and send the PDF. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Bye.